जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। अप्रे नित्याहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपयेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। शरीर में रहने वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन पांचों वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग वज्र योग नामक योग प्रणाली से विषय रूपी समस्त आहारों का नियंत्रण करके बड़े धैर्य से प्राणों में प्राणों का ही हवन करते हैं। इस प्रकार के यज्ञ का साधन करके मन का सारा मल निकाल कर दूर फेंक देने वाले ये सब यज्ञ करता मोक्ष की ही इच्छा करते हैं। जो लोग माया और मोह को जलाकर केवल सहज आत्मस्वरूप ही बचे रहते हैं, उनमें फिर अग्नि और यष्ठा की भावना ही बाकी नहीं रह जाती। फिर ऐसी अवस्था में यज्ञ करने वाले का हेतु पूरा हो जाता है, यज्ञ विधान समाप्त हो जाता है और कर्मों के सब झगड़े भी मिट जाते हैं। उस समय विचार और हेतु के प्रवेश करने की जगह ही बाकी नहीं रह जाती और द्वैत भावना का दोष स्पर्श भी नहीं कर सकता। There are some who, through systematic regulation of their diet, come to gain a complete mastery over themselves and their appetites and passions. However, it must be very well noted that all practices, physical, mental, or intellectual, that are generally known as divine and religious, are all without exception only techniques by which the mind and intellect gets itself adjusted for the greater and more effective self-application in meditation. Om. जय गुरुदेव जय पदशरणम. शरीरात 5 प्रकारची वायू असते: प्राण, अपान, समान, उदान आणि व्यान. यापैकी प्राणाचे स्थान हृदयामध्ये, अपानाचे स्थान गुदाद्वारात, समानाचे नाभीत, उदानाचे कंठात आणि व्यानाचे संपूर्ण शरीरात असे मानले जाते. या 5 प्रकारच्या वायूला पंचप्राण असेही म्हणतात. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, काही लोक वज्रयोग नावाच्या योग पद्धतीद्वारे सर्व सांसारिक सुखावर नियंत्रण ठेवून मोठ्या संयमाने जीवनाचा त्याग करतात. असे यज्ञ करून आणि मनातील सर्व अशुद्धता काढून टाकून हे सर्व यज्ञ करते केवळ मोक्षाची इच्छा करतात. जे लोक भ्रम आणि आसक्ती जाळून टाकतात आणि केवळ त्यांच्या नैसर्गिक आत्मस्वरूपातच राहतात, त्यांच्यामध्ये अग्नी आणि वैभवाची भावना उरत नाही. मग अशा परिस्थितीत यज्ञ करणाऱ्यांच्या व्यक्तीचा उद्देश पूर्ण होतो, यज्ञविधी संपतो आणि कर्माशी संबंधित सर्व वादही संपतात. त्यावेळी विचारांना आणि हेतूला प्रवेश करण्यासाठी जागा उरत नाही आणि द्वैतवादी भावनांचा दोष त्याला स्पर्शही करू शकत नाही. జై గురుదేవ్ జై పదశరణం. మా సద్గురు సందేశం. శరీరంలో ఉండే వాయువులు 5 విధాలుగా ఉంటాయి. అవి ప్రాణవాయువు, అపానవాయువు, సమానవాయువు, ఉదానవాయువు, వ్యానవాయువు. ఇందులో ప్రాణవాయువు హృదయ స్థానమున, అపానవాయువు గుదస్థానమున, సమానవాయువు నాభి స్థానమున, ఉదానవాయువు కంఠస్థానమున, వ్యానవాయువు సమస్త శరీరమున ఉంటాయి. భిన్న భిన్నమైన ఈ 5 వాయువుల్నే పంచప్రాణములని కూడా అంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెబుతున్నాడు. కొంతమంది వజ్రయోగముని పేరు గల యోగ ప్రక్రియచే విషయరూప సమస్త ఆహారమును నియంత్రణ చేసి గొప్ప ధైర్యంతో ప్రాణముల్లో ప్రాణమునే హవనం చేస్తారు. ఈ విధమైన యజ్ఞ సాధన చేసి మనసందుల సమస్త మలినములను తొలగించి బయటకు విసిరివేయు ఈ యజ్ఞకర్తలందరూ మోక్షమునే కోరుకుంటారు. కొందరు మాయా మోహములను దహనం చేసి కేవలం సహజమైన ఆత్మరూపమునే మిగుల్చుకుంటారు. వీరిలో తిరిగి అగ్ని మరియు యజ్ఞకర్త అనే భావనే మిగిలి ఉండదు. అటువంటి స్థితిలో
యజ్ఞకర్త యొక్క లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. యజ్ఞ విధానం సమాప్తమైపోతుంది. కర్మల యొక్క సమస్త గొడవలు సమాప్తమైపోతాయి. ఆ సమయంలో ఆలోచనలనేవి లక్ష్యంలో ప్రవేశించేందుకు స్థలం కూడా మిగిలి ఉండదు. ద్వైత భావన దోషము స్పర్శించినైనా స్పర్శించజాలదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ഇഷ്ടമേ നിറവേറാలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ് ജയ് പ്രസാദ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ശരീരത്തിൽ 5 തരത്തിലുള്ള വായു ഉള്ളതായി അനുമാനിക്കുന്നു. പ്രാണൻ, അപാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ, വ്യാനൻ. ഇവയിൽ പ്രാണന്റെ സ്ഥാനം ഹൃദയമായും ഗുദം അപാനനും പൊക്കിൾ സമാനനും തൊണ്ട ഉദാനനും ശരീരം മുഴുവനും വ്യാനനും ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 5 തരം വായുവിനെയും പഞ്ചപ്രാണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ചില ആളുകൾ വജ്രയോഗം എന്ന യോഗാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ എല്ലാ ലൗകിക സുഖങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും വളരെ ക്ഷമയോടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും മനസ്സിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗികളെല്ലാം മോക്ഷം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. മിഥ്യാധാരണയും ആസക്തിയും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ് സ്വന്തം സ്വാഭാവിക സ്വത്വത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവരിൽ പിന്നീട് അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സിൻ്റെയും വികാരം നിലനിൽക്കില്ല. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ യജ്ഞം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ചിന്തകൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും കടന്നു വരാൻ ഇടമുണ്ടാവുകയില്ല. ദ്വൈത വികാരങ്ങളുടെ പോരായ്മയ്ക്ക് അതിനെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।